हेलो फ्रेंड्स। मैं अपने गेम रूम में इस तरह की लाइट लगी थी जो कि डोम लाइट कहते हैं। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस डोम लाइट विद अ सीलिंग फैन इन माय गेम रूम। पहली बार कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। सो in fact I have already done it once and there was some issue with the fan, so I took it out. मैंने फैन को निकाल लिया था कि कुछ खराबी थी उसमें, मुझे ऐसा लगा। बट तो यहाँ पे डोम लाइट है दूसरे रूम में, दिखाने के लिए कि कैसा सिचुएशन कैसा दिखता है। जहाँ मैं फ़ैन लगा रहा हूँ ये डोम लाइट को रिप्लेस करके फ़ैन का फिक्सचर ये लगा हुआ है बेस। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ डिटेल में है क्या इसके अंदर, कुछ नहीं, बस एक ये बेस प्लेट होती है। दिस इज अ बेस प्लेट व्हिच कम्स विद द फैन and you will see there are two boards, this one and this one here. There's a UI box behind this which is like a circular box which basically hosts all the wires inside. Ready? And so now I took off the two screws and then the light actually came off, which is just sitting there, if you see. Those are the two screws, 1 and 2, and there was some wiring. So I detached the wires and then took the whole thing out. And now again, this is the fixture of the fan. Put the plate instead of the lights. And of course, this is the motor of the fan as well. So I would like to show what this fan model is, so at least you know which one have I installed here. So I got this, इसको मैंने लिया था from Home Depot. It's Hampton Bay. It's Sidlow 52-inch LED indoor ceiling fan. So I like the fan in terms of its design, look very modern as well as classy, so it's a combination. It was for I think $94 without tax. So in the box, of course, you had this motor, the plates. So once the base plate is installed, then you have this other plate which actually is connected to the motor. You see, so these two plates should attach quite tightly. ये वाला plate जो है it is held by 4 small screws. और इसमें एक hook भी है, J hook type का. So अगर you're trying to tighten this thing, since this is heavy, to take some of the load off this motor from your hands, it just helps rest this side of the plate on this hook. So I would start here and then go diagonal over there, tighten it, and then tighten the other two. So anyways, this is where I am. It seems to be quite tight, and the wiring is important. You can see the wiring. You can house this inside the UI box. So I will talk about that later. So if you need more details around that, I think there's a video I can post. But coming back to this box, there's I think double tape. This portion of this motor keeps coming out, but doesn't matter. Is not cause of worry or concern. तो ये देखो, मैंने चेक कर लिया, टाइट है ये housing, ये हिल नहीं रहा है. So it should be okay. देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे इसको अटैच करते हैं चीज़ें. ये चारों नट जो है इसके टाइट हो चुके हैं. All 4 nuts actually, screws are tightened up, 2 here and 2 on the other side. So now it's all stable, solid. This thing is also feels good. So next is I'm going to attach the the wings or the blades of the fan. Next over है, पंखे लगाते हैं इसके. नेक्स्ट चीज़ जो है, फैन का मोटर लगा के इस प्लेट को लगाना है. देखेंगे इसमें एक स्लाइडिंग टाइप का
लिंक है इसमें, स्क्रू में फंस जाता है, और दूसरी तरफ ये स्क्रू है, तो उसको स्क्रू को भी मैं बाद में लगाऊंगा, इस वाले को बाद में लगाता हूँ। इस वाले को अभी जो रोटेट करके स्लाइड करने वाला उसको भी इस तरफ फिट कर देता हूँ। ठीक, ये अब इधर भी हैंग हो गया। अब बाकी दो को मैं टाइट करता हूँ यूजिंग स्क्रू ड्राइवर। इसमें विंग में ये पार्ट अलग था और वो दूसरा अलग था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, क्योंकि ये केवल 3 होल्स हैं इसके अंदर, 3 holes are there, and then you just slide over the wing and then it actually locks into place. So there's nothing I really did here. So yeah, you see this locking mechanism or tab, you just press this and this wing is going to come out again, a blade is going to come out. So now you'll see the other portion which actually connects to the central motor, जो बीच वाले मोटर से कनेक्ट होता है, इसमें 2 स्क्रूज पहले से दिए हुए हैं। तो मेरे को कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बस पोजीशन करना है उसके साथ, और स्क्रू ड्राइवर से करता हूँ, क्योंकि अदरवाइज इट मे रिप दी होल्स ऑफ दी motor slots. So I'm just going to position this blade and then slowly or gently slot meant for that purpose, and then start tightening this thing. So now I see it's getting attached to the motor. So that's how you attach the wing or the blade. पहला blade इसमें लग गया, थोड़ा ठीक से टाइट कर देंगे इसको। ये हो गया, पहला विंग हो गया। इसी तरह से बाकी 4 और अटैच कर देंगे। स्क्रू अभी मैं टाइट कर रहा हूँ इसमें। थ्रू नॉर्मल हैंड ड्रिवन स्क्रू ड्राइवर। इसको भी कर देते हैं, पूरा नहीं करूँगा, दूसरी तरफ वाला पहले करता हूँ, उसके बाद डायगनल इसके उस तरफ वाला पहले करूँगा और फिर वापस आके इसको टाइट कर। ये फ़ैन के ब्लेड्स सारे अटैच हो गए, कुछ नहीं, बस इसमें स्क्रू हैं 2 हर विंग में, हर ब्लेड में, और इस स्ट्रक्चर को अटैच करता है पहले। उसके बाद ब्लेड जो मैंने जैसे बताया था वो स्लाइड ऑन होता है, इसके ऊपर स्लाइड ऑन इन स्लॉट्स में फिट करके ये स्लाइड इट ऑन एंड ये क्लिक होता है, यहाँ पे टैब की वजह से लॉक हो जाता है। एनीवेज, तो अभी ये फ़ैन का स्ट्रक्चर रेडी है। अब नेक्स्ट होगा ये जो लाइट्स हैं इसमें, लाइटिंग हाउसिंग, इसके लिए 2 कनेक्शन है, ब्लू एंड वाइट, और उस लाइट स्ट्रक्चर में और हाउसिंग में भी वहाँ पे 2 कनेक्टर्स हैं उसमें, तो मेल फीमेल जो है आपस में ही they'll fit in, and then I'll have to just tighten these screws and the lighting should be all set. थोड़ा सा वाइब्रेशन होता ही है, and that's natural. इसमें जैसे वायर अटैच कर ली, जैसे बता रहा था, ब्लू टू ब्लू एंड वाइट टू वाइट। बाकी मुझे कुछ नहीं करना है, ये प्री अटैच हैं बाकी चीज़ें, बस फैन के हाउसिंग से लाइट्स को अटैच करके जस्ट अटैच दी लाइट्स टू दी हाउसिंग द फैन, एंड आई एम जस्ट गोना प्लेस इट इनसाइड दिस, or just gently connect these 2 parts together and unscrew them together. You see the screw slot, so I'm going to do that, and then next clip I'll show. ये लास्ट स्क्रू अप टाइट कर रहा हूँ मैं, लाइटिंग का हाउसिंग से कनेक्ट करने के लिए उसको with the fan housing, fan motor. ये टाइट हो गया, I'm done. So now the whole fan is combined and all assembled. All the parts are tightened up. I've checked, confirmed everything looks okay. Now what I'm going to do is next is I will switch on the main and then try and come back and see if this thing is operational and go from there. Now the fan is operational. Everything is good. Looks nice as well. Thank you.
धन्यवाद।